ఢిల్లీ పరేడ్ మైదానంలో సైనిక దినోత్సవ కవాతు ఆకట్టుకుంది. ద్విచక్ర వాహనాలు, హెలికాప్టర్లతో సైన్యం చేసిన విన్యాసాలు అలరించాయి. అత్యవసర సమయాల్లో సైన్యం స్పందించే నమూనా తీరును జవాన్లు కళ్లకు కట్టారు. चलेंगे, लहराएंगे तिरंगा, पीछे नहीं टलेंगे. Speaks of the highest degrees of fitness, endurance, motivation, resolve, grit and tenacity. They can even penetrate well-fortified defenses. And look above, ladies and gentlemen, you shall soon see the two advanced light helicopters of 301 Army Aviation Squadron. They shall be dropping 2 sticks of 8 personnel of 6 paras each into the combat zone. To speed up operations, they are going to act as a force multiplier. भारतीय सेना का आकाशीय आयाम 205 आर्मी एविएशन के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर 6 पैरा के कमांडो कैप्टन मिहिर शाह के नेतृत्व में जांबाज अब थोड़ी ही देर में उतारे जाएंगे जमीन पर. आसमां से जमीन पर दिलेरी का हस्ताक्षर. दुश्मन के अंदरूनी क्षेत्र में अहम टारगेट. यहां पर आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि दाहिनी ओर संचार केंद्र जो कि दीवाल सफेद और लाल रंग से बनाया गया है, दीवाल के ऊपर है, और बाईं ओर एक एनिमी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इंगित करता है जो कि गेरुए और पीले रंग से बना है, जिसकी खिड़कियां हमारी ओर दिख रही हैं. वो बाईं ओर दुश्मन का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है. These troops have been inserted in the combat zone by slithering operations, also known as fast roving operations. Requires high standards of courage, initiative and determination to operate deep within enemy territory. You shall see all these troops are now manning up. The troops which got inducted earlier, the pathfinders, and of course the troops which you have now seen descending from the heavens as it were. बाहों में इस्पात ढला हो, सांसों में बारूद, संगीनों से गीत लिखूंगा दुश्मन के खूंटू. उठो साथियों, समय नहीं यह शोभा और श्रृंगार का. आज चुकाना है ऋण आपको अपनी मां के प्यार का. In today's battle, ladies and gentlemen, there will be no respite, no rear nor forward areas, no night nor day, no good or bad weather. Where the enemy is like a serpent, they have a radius of action of approximately 150 kilometers. And take a rotation to the front, we shall soon see how the infantry mortars are going to come into action. They provide intimate fire supporters to assaulting infantry, fire 5 different kinds of ammunition. 81 mm इन्फेंट्री मोटर. लीन ऑन फोर्स आप देख रहे हैं किले की दीवार के साथ साथ 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के BMP-2 और T-72 टैंक और ATGM लॉन्चर, 20 लांसर्स, 10 आर्मर्ड रेजिमेंट के T-72 टैंक के साथ 35 गोरखा राइफल्स के जीप आधारित ATGM लॉन्चर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आता हुआ. This is done over a frontage of 20 to 25 kilometers, but here it is being shown in a restricted space by armored and mechanized elements, preventing the पहले से डिप्लॉयड था और आपकी नजर के सामने था, जिसे आपकी नजर पकड़ नहीं पाई. अब अपने ऑब्जेक्टिव पर असॉल्ट